Hello people and welcome inside the 2020 Hyundai Creta. जो वेरिएंट मेरे साथ अभी है, this is the 1.4 लीटर turbo-petrol 7-speed automatic. अब Hyundai Creta की प्राइसिंग जो है for the second generation model शुरू होती है from rupees 9.9 lakhs goes all the way up to 17.2 lakhs and this new Creta has already managed to garner more than 30,000 bookings. तो भले ही लोग जो हैं उनके पास काफी डिफरेंट ओपिनियंस थे बेस्ड ऑन व्हाट द कार लुक्स लाइक एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में, फिर भी काफी लोग Hyundai को ट्रस्ट करते हैं और क्रेटा ब्रांड उन्हें काफी पसंद है इन द अर्बन एसयूवी सेगमेंट. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट. ये टर्बो पेट्रोल वेरिएंट का SXO ट्रिम है, सो दिस इज द टॉप मोस्ट मॉडल दैट यू कैन बाय. एंड सबसे पहले आप गाड़ी के अंदर आने के बाद नोटिस करोगे यू गेट ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. अगर आप टर्बो पेट्रोल वेरिएंट खरीदते हो दिस इज व्हाट यू गेट. लेकिन ऑन द अदर वेरिएंट्स यू गेट अ ड्यूअल टोन इंटीरियर अपहोल्स्ट्री व्हिच feels a little more lighter and airier in the cabin, but this adds a nice sporty touch. सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे काफी सारे रेड एक्सेंट्स हैं. तो यहाँ पे एसी वेंट्स के आसपास आप देख सकते हो यू हैव दीज रेड एक्सेंट्स, दे आर फिनिश्ड वेरी नाइसली. लेफ्ट मोस्ट एसी वेंट और राइट मोस्ट एसी वेंट पे भी आपको ये रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो लेदर अपहोल्स्ट्री है ऑन द गियर स्टिक, यहाँ पे भी रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है. देयर इज रेड कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग ऑन द सीट्स एज वेल एंड इवन ऑन द स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे भी आपको रेड स्टिचिंग दी गई है. सिंस वी आर लुकिंग एट द स्टीयरिंग व्हील, दिस इज द न्यू डिजाइन. आपके लिए थंब कॉन्टूर्स यहाँ पे बनाए गए हैं सो दैट यू कैन होल्ड इट वेरी नाइसली एंड द ओवरऑल डिजाइन इज डिफरेंट कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल स्टीयरिंग व्हील डिजाइन्स. ये काफी अलग दिखता है, काफी हटके दिखाई देता है. And this design that you see over here, this design is uniform with the LED DRLs that you have outside, the LED tail lamps that you have at the back. So Hyundai has tried their bit to maintain some uniformity in their design detailing and it shows. This is something that you should notice. Steering wheel पे जो leather है feels very good to touch and the steering wheel is of the right size as well. यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारे ही कंट्रोल्स दिए गए हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंट्रोल्स हैं दीज आर फॉर योर इंफोटेनमेंट. राइट हैंड साइड पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं दीज आर फॉर योर MID एंड फॉर क्रूज कंट्रोल एज वेल. यूज करने में काफी आसान है. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू नोटिस द स्पीडोमीटर क्लस्टर. सेंटर में डिजिटल डिस्प्ले, कलर्ड डिजिटल डिस्प्ले. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको RPM मीटर, टैकोमीटर और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो द इंजन टेम्परेचर एंड द फ्यूल गेज. दिस बिग colored display unit that you see over here as the primary speedometer cluster. आप देखिए right now the car is in eco mode. When I switch it to comfort it changes color. ये जो ambient lights है साइड में ये भी color change करते हैं and then when I switch to sport it turns red. So this is a nice touch. It adds a nice little drama to your daily drive. इसके बाद आप देख सकते हो कि जो traction control modes हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं. Check this out. You can switch between snow, mud and sand. So this is also an additional feature which the old Creta never used to offer you. अभी जब भी आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है you get that button over here. तो इस रोटरी नॉब को आपको टॉगल करना है. So when you press it, it is right now on traction. When you press it again, then you can select it in the drive mode settings. So यहाँ पे आप अभी drive modes change कर सकते हो. Overall readability काफी अच्छी है यहाँ पे and you can notice there is a good amount of data that is shown. इसके अलावा इस डिस्प्ले में आपको ये कंपास भी दिखाई देता है and you also have your tire pressure monitoring system displayed over here. So all of these features are going to definitely keep you happy and informed when you are out on a drive with the 2020 Hyundai Creta. Your engine start stop button is positioned over here. It is nicely placed. आपको काफी easily accessible भी है. ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट स्विच. डोर पैड हैज द कन्वेंशनल बटन्स ओवर हियर फॉर द रेगुलर थिंग्स दैट यू हैव टू ऑपरेट व्हिच इज योर पावर विंडोज एंड योर आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स. प्लास्टिक्स की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डेफिनेटली अच्छी है लेकिन आई रियली विश कि सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए जाने चाहिए थे बिकॉज इन दिस सेगमेंट राइट नाउ फॉर दिस प्राइस यू विल expect that. After that you are going to notice the large touch screen color display head unit that you get over here. This music system that you get very good to use. काफी अच्छा टच है इसका.
You can notice you have air purifier as well. Air purifier में भी modes हैं यहाँ पे जो यूज करने में काफी आसान है. I set it at auto all the time. After that you can notice ये जो standard home screen है, you have a 3-pot layout. 3 अलग अलग sections हैं यहाँ पे, so you can get your maps, you can get your media info and your compass over here as well. These buttons also make it very easy to operate this head unit. इसके नीचे आप देखोगे you have an automatic climate control. This looks very bland. It could have been a much more fancy setup. It could have felt a little different, a little better. It is very easy to use as such. काफी इंट्यूटिव है, तो आपको आपकी नजरें जो हैं गाड़ी चलाते वक्त हटानी नहीं पड़ेंगी इसको यूज करते वक्त. बट आई थिंक इट लुक्स जस्ट अबाउट ओके. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू नोटिस दिस गियर सिलेक्टर. ये देखिए काफी प्रीमियम दिखाई देता है, काफी अच्छा भी फील होता है व्हेन यू होल्ड इट. इट फील्स नाइस इन योर हैंड एंड इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ ग्रिप एज वेल. अराउंड इट यू कैन नोटिस यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक. आपको ऑटो होल्ड का बटन भी यहाँ पे दिखाई देता है. एंड यू हैव वेंटिलेटेड सीट्स इन द Hyundai Creta. सो कूलिंग फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है, नॉट जस्ट फॉर द ड्राइवर बट इवन फॉर द फ्रंट पैसेंजर. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव इन इंडिया, क्योंकि लेदर सीट्स के साथ समर सीजन में ये फीचर जो है वो काफी यूजफुल है. यहाँ पे एक और आपको कैमरा व्यू के लिए बटन दिया गया है. सो व्हेन यू प्रेस दिस you can notice that if you are in drive mode, press this and you are going to get the rear view camera display over here. So this can be on all the time. और इसका आप brightness और contrast भी set कर सकते हो if you feel like. After that you are going to notice you have 2 cup holders over here. Standard setup, but this finishing is very nice. ये जो satin silver यहाँ पे दिया गया है, it adds a nice premium touch. Then you get wireless charging for your smartphones. I'm going to place my smartphone over here right now. Check this out. As soon as I place my phone over here, it is going to start charging. You have a power point, you have a USB charging point, and you have a fast charging USB point as well over here. So all your equipment is going to be charged all the time. Glove box में आप देख सकते हो काफी decent width है. Depth इतनी great नहीं है, but width काफी अच्छी है. And you also have ventilated function over here. तो cooled glove box है, तो आप अपने beverages जो है वो यहाँ पे ठंडे रख सकते हो when you wish to go on a long drive. This armrest it opens up. यहाँ पे आप देख सकते हो काफी चीजें हमने यहाँ पे रखी हैं. So there is enough storage to keep something safe which is not seen if you have parked your car somewhere where you are not sure of if it is safe or not. आप देख सकते हो air purifier भी दिया गया है. Air purifier का display आपको यहाँ पे clearly दिख रहा है and it throws air all around. तो आप यहाँ पे air purifier का जो display है you can check it out how it works. So it releases air in the front cabin, in the rear cabin, and it sucks in air from the side. So this is how this air purifier works, and it is a little noisy if you set it on the highest setting. After that आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक electrochromic rear view mirror दिया गया है. You have the standard blue link connectivity over here, and you have SOS and a towing service button as well, just in case अगर आप emergency में इन services का use करना चाहते हो. You have a sunglass holder. यहाँ पे आप देख सकते हो a large vanity mirror on the passenger side, but no illumination. This is not illuminated now. This is a big miss in a car of this segment. Of course यहाँ पे आपको LED cabin lamps दिए गए हैं, but no illuminated vanity mirror is a big miss. और ड्राइवर के यहाँ पे आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर दिया गया है. There is no vanity mirror over here, but I don't think drivers should focus on that a lot. The next highlight of the Hyundai Creta, which I forgot to show you on the steering wheel, are these paddle shifts. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो paddle shifts हैं, they are very nicely positioned. तो जब आप गाड़ी चला रहे हो, when you want to drive it a little fast and in an engaging way, if you want better control of the gearbox and the motor, these paddle shifts are very nicely placed और ये काफी अच्छे भी feel होते हैं. Paddle shifts are not very long, but they fit in your hand very nicely when you want to get hold of them. Of course, अगर आपको Tiptronic function use करना है, so you can slot the gear selector to the right hand side in sport mode and then move it plus or minus upwards or downwards to control the gearbox. But now let's talk about the seating comfort. ये Hyundai Creta जो है, the 2020 model, it is still a 5-seater, but how comfortable it is for your driving style, for your height. Let's check that out. अब मेरी height है 5 feet 8 inches and this is the amount of headroom that I have.
सीट मैंने एट इट्स लोएस्ट सेटिंग सेट कर रखी है एंड दिस इज माय आइडियल ड्राइविंग पोजीशन. सो चेक दिस आउट. दिस इज द अमाउंट ऑफ रूम. इवन सेटिंग मुझे काफी अच्छे से गाड़ी की पूरी विजिबिलिटी मिल रही है. अगर मैं पहली बार भी इस गाड़ी को चलाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू फील नर्वस. इफ आई वांट, आई कैन इंक्रीज द सीट हाइट एंड गेट अ मच बेटर कमांडिंग सीटिंग पोजीशन. आप देख सकते हो सीट पे आपको ये परफोरेटेड लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है. सीट दिखने में काफी अच्छी है, काफी खूबसूरत है एंड द साइड बोल्स्टरिंग ऑफ दिस सीट इज आल्सो क्वाइट नाइस. सीट कंपाउंड इज ऑफ द मीडियम फर्म कैटेगरी, सो दिस इज गोइंग टू कीप यू हैप्पी ऑन योर लॉन्ग ड्राइव एज वेल. और आपने पहले ही देख लिया है, यहाँ पे आपको रेड कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग और स्टिचिंग भी दी गई है फॉर अ प्रीमियम टच इन दिस टर्बो पेट्रोल वेरिएंट ऑफ द Hyundai Creta. This is how you are going to sit. This is the amount of space that you are going to get. लेकिन अगर आप इस गाड़ी को एज अ शॉफर ड्रिवन कार यूज करना चाहते हो या अगर आप बैक सीट में ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, लेट्स जंप इन द बैक सीट एंड चेक आउट हाउ मच स्पेस इज गोइंग टू बी ऑन ऑफर ओवर देयर. नाउ जंपिंग इन द बैक सीट ऑफ द Hyundai Creta, मैं बैठा हूं बिहाइंड माय ओन driving seat position. So check this out. This is the amount of legroom that I get and this is fantastic for a car in this segment. और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. This is really good. For my height, I am 5 feet 8 inches जैसे कि मैंने आपको बताया. This is the amount of headroom that I am going to get. But the seat is right now at its most reclined angle. Yes, Hyundai Creta में 2020 में आपको reclining seat function मिल जाता है. So I'm going to lift it up right now and show it to you. This is the first locking position. आपको सिर्फ दो पोजीशन मिलते हैं. This is the range of motion. तो आप ये आर्क समझ सकते हो यहाँ पे. This is how much it is going to go behind when you pull that lever. So this is going to add to your overall comfort. Under thigh support की अगर बात करें तो इस सिचुएशन में जब मैं मेरे पैर स्ट्रेच करके बैठा हूँ, यहाँ पे मुझे decent amount of thigh support मिल रहा है. If you like to keep your legs closer to you and if you don't like to stretch your legs, right now this is not going to be all that great. I wish कि यहाँ पे एक एडिशनल सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा सीट कुशनिंग दी जाती ताकि आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर मिल जाता यहाँ पे. बट दिस इज नॉट रियली समथिंग दैट यू शुड कंप्लेन अबाउट. देयर आर 2 सीट बैक पॉकेट्स ओवर हियर बिहाइंड द फ्रंट सीट्स इन द Hyundai Creta फिनिश्ड इन लेदर. यहाँ पे आप ये हार्ड प्लास्टिक देख रहे हो बिकॉज द फ्रंट सीट्स कम विद वेंटिलेटेड सीट फंक्शन, सो दे हैव टू प्रोटेक्ट दैट मैकेनिज्म. इन द बैक सीट अगर आपको इस गाड़ी में गर्मी लग रही होगी on a summer day, you have these manual sunshades, these sun curtains, so that is going to definitely keep you happy and not sweaty. The next coolest thing of the Hyundai Creta on the inside is this massive panoramic glass sunroof. Rear section जो है ये fixed है and this section pops up and slides back. अब ये बारिश हो रही है, so I can't really show that to you, but it looks fantastic, especially जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ. From my point of view, whenever I'm going to go out on a drive, this is going to make me feel very special. This is a good feature to have and this definitely is going to attract a lot of customers. यहाँ पे armrest के साथ आपको 2 cup holders भी दिए गए हैं. You can use this to rest your arm as well. और यहाँ पे भी जहाँ पे मैं मेरा हाथ रेस्ट करता हूँ, you get soft touch material over here, contrast stitching again in red over here as well to add to that premium touch. Bose के प्रीमियम स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे. You can notice the Bose branding and you have a 1 liter cup holder over here as well. इस बॉटल के साथ साथ आप कुछ और चीजें भी यहाँ पे रख पाओगे in the Hyundai Creta. Now over here in the back seat you get 2 adjustable headrests for either ends, but the 5th passenger doesn't get a headrest at all. Even a small fixed headrest is not available. अगर आपको यहाँ पे as a 5th passenger बैठना है, this is the amount of headroom that you're going to get. It is a little elevated, the seat bench over here, and this seat back over here also is a little jutting forward and it does feel a little hard because of the armrest, but काम चलाने लायक है क्योंकि ट्रांसमिशन हम जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है. So check this out. I can manage my feet. I have a feet size 9, UK size 9, and this is comfortable enough for short journeys for sure. लेकिन long journeys में आप as a 5th passenger जरूर इस गाड़ी में थक जाओगे because there is no headrest. The cool thing are these accessories, these soft cushions for your headrest, and they offer you fantastic comfort. So just in case you want to take a nap, buy these if these are accessories. अगर आपको ये stock मिल रहे हैं from the dealer whenever you buy the car, there is nothing better that you can get for added comfort. Parcel tray पे recesses बनाए गए हैं ताकि चीजें जो हैं वो अपनी जगह पे रह सकें. यहाँ वहाँ they don't get thrown around too much, and that again is a good thing. You have retractable grab handles with LED lamps over here in the rear cabin, and this sun curtain over here
For this massive panoramic sunroof, you can close it as well with one touch of a button. So overall, this is definitely a comfortable car. But just in case if you are wondering how much space is going to be available अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो for your chauffeur driven purpose, let me show that to you. I'm going to push this seat all the way forward. Check this out. This is the amount of space that I am getting. I can sit cross-legged, and this Hyundai Creta is going to be good enough for your chauffeur-driven requirements. आपको काफी अच्छी space भी मिलती है. Check this out. There is really good leg room. I am not going to spend a lot of time because the camera equipment is getting wet because it is raining right now. You have these cuff plates as well, which also add to a nice premium touch to this Hyundai Creta's overall cabin experience. I am happy and I am going to be comfortable, especially because you get AC vents as well. दो AC vents मिलते हैं आपको यहाँ पे, again red accents, और आप इन AC vents को पूरी तरीके से बंद भी कर सकते हो. You get a fast charging USB point and you have another slot over here to keep your smartphone, park your smartphone when it is being charged. लेकिन कितनी space है इस गाड़ी में? If you want to carry luggage, let's quickly open the tailgate and check it out. So to open the boot of the Hyundai Creta, you have a request sensor over here below the E alphabet, and this is the amount of space that you get. मैंने एक backpack रखी है for your reference, and this is the amount of depth that you have, and it can easily accommodate 5 or 6 bags, medium size bags. या अगर आपको और भी ज़्यादा सामान कैरी करना है, आप इस पार्सल ट्रे को हटा भी सकते हो. This parcel tray moves around with your tailgate thanks to these strings over here. And again, have a look at this parcel tray. It is really generous, तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी रख सकते हो. So, in the luggage carrying capacity, the Hyundai Creta is definitely going to be comfortable. अगर आपको एक vacation पे जाना है for 4 to 5 days for 4 people, there is enough luggage space. इसके नीचे, इस shelf के नीचे आप देख सकते हो, you have your spare wheel, and that also is going to be very easy to access. There are 2 storage points on either ends over here as well. This one is a little wider, and there is one over here as well. And you can also notice the Bose speaker over here at the back in the tailgate area of this Hyundai Creta. So what did you think? तो क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में? क्या आपको लगता है ये जो 2020 Hyundai Creta है, do you think this is premium enough? Do you think this is good looking? Do you think this is comfortable? And is it worth your money? सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेज के चैनल को. अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं अबाउट दिस Hyundai Creta, डू आस्क मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. टिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट, एंड कीप शिफ्टिंग गियर्स.